Good afternoon, students. Welcome back once again to the mathematics class. In today's lecture, we are going to study trigonometric ratios of compound angles. Now, already we know trigonometric ratios. Then, what do you mean by compound angles? Compound angles किसे बोलते हैं? Let's see. The algebraic sum of two or more angles is called compound angles. For example, a plus b, a minus b, a plus b minus b, etc. are compound angles. क्या है यहाँ पे compound angles किसे बोलते हैं हम? The algebraic sum of two or more angles, दो और दो से ज्यादा एंगल का सम जब करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज नथिंग बट अवर कंपाउंड एंगल्स. तो आज हम क्या है कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी इज सम ऑफ टू एंगल्स. दैट इज ए इज एंगल, बी इज ऑल्सो एन एंगल, सम ऑफ दिस टू एंगल. नाउ ए माइनस बी, सर सम बोल के बोले आप यहाँ पे डिफरेंस डाले ए माइनस बी बोल के पूछ सकते हैं आप. तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं ऐसा, right? Therefore, it is also again sum of two angles. It is A, it is minus B. Therefore, again the sum of two angles is nothing but our compound angles. Two or it may be more than two. अब यहाँ पे A plus B minus C ले लिए. This kind of angles, what we call, these are called it as compound angles. Next, we solve the compound angle formulas, right? Now, for initially, first one is first formula of a compound angle. We have to prove algebraic. We have to prove geometrically how it satisfies. Sin a plus b, which is equals to sin a cos b cos a sin b, and second one is cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b. These two are the formulas which we have to prove geometrically. ग्राफ डाल के ये दो वैल्यूज प्रूव करना है हमें. कंपाउंड एंगल से देखो यहाँ पे एंगल A प्लस बी, साइन ऑफ एंगल A प्लस बी एंड कॉस ऑफ एंगल A प्लस बी के बारे में आज हमने पढ़ना है यहाँ पे, राइट? दो एंगल सम कर रहे देखो यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स. इट शोज व्हाट? A प्लस बी इज नथिंग बट अवर कंपाउंड एंगल्स. अभी ये प्रूव करने के लिए क्या है? लेट अस कंसिडर, लेट्स सी प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन. नाउ वन बाय वन देखते जाएंगे, राइट? नाउ लेट अस कंसिडर a line. Let us consider a line. OX be the initial line, right? एक initial line consider करें OX बोल के. When this line moves in anti-clockwise direction. अभी पॉइंट यहाँ पे है, अभी मूव होके पॉइंट यहाँ पे आया बोल के समझो, right? This point is Y, right? Next और एक पॉइंट पे मूव होके कहाँ पे आए? यहाँ पे आ गया बोल के समझो, यहाँ पे आके रुका है, राइट? नाउ दिस पॉइंट इज Z. OX be the initial line. When it rotates, it reaches the point OY, and again when it moves again in anti-clockwise direction, it reaches the point OZ, right? Now take a point P on Z.
choose a point P on Z and draw PM perpendicular to OX. Draw PM perpendicular to OX and PQ perpendicular to OY. PQ perpendicular to what? OY. And this one R, take it as Q, take this as R. RQ is perpendicular to PM. RQ is perpendicular to what? PM. And draw QN perpendicular to again OX. QN perpendicular to OX. Now this angle is A. This angle XOY angle XOY equals to what? A. And angle YOZ angle YOZ, which is equals to what? B. And angle these two XOZ is A plus B, and angle XOZ equals to what? A plus B is the angle. तो भी क्या है? XOY, which creates an angle A, whereas YOZ creates an angle B, and finally XOZ. This much angle is A, this much angle is B. Now sum of these two angles is what? A plus B. This much angle is what? A plus B. Right? Now let us consider a triangle. This one. Let us consider a triangle MOP. Triangle MOP. MOP. Let us consider a right angle triangle MOP with the angle A plus B. Now we have to find this one first. Angle A plus B find करेंगे अभी क्या होता देखेंगे, right? Angle A plus B, sine of A plus B. Now it is A plus B is an angle, right? Sum of two angles, which is nothing but an allied angle already we said in the previous definition, right? Now angle A plus B equals to, here OM is base, PM is what? Perpendicular side, OP is hypotenuse for the angle A plus B. Now sine A plus B equals to, the ratio of sine theta is what? Sine of A plus B, PM by OP, that is perpendicular divided by hypotenuse, that is PM by OP, right? Perpendicular divided by hypotenuse, PM by OP it is. Now PM can be written as, this PM can be written as MR plus RP. MR plus of RP upon OP लिख सकते हैं ऐसा. PM can be written as, or MP can be written as MR plus of RP लिख सकते हैं. Now again, which is equals to MR, which is equals to NQ plus RP as it is divided by OP. RP as it is divided by OP. Now write separately, denominator write separately, and what we get? NQ by OP plus RP by OP. NQ by OP plus RQ by OP. Right? Now QN और NQ can be written as NQ by OP. देखो क्या हो रहा अभी, NQ कहाँ पे है? NQ by OP. ठीक है, परफेक्ट ट्राइंगल बन रहा है क्या यहाँ पे?
अभी एन क्यू बाई ओपी है हमारे पास, एन क्यू बाय ओपी, दिस साइड इज ओपी। ये ट्राइंगल बन रहा है क्या? ये एक साइड है, इधर एक साइड है, सिर्फ दो साइड है, ट्राइंगल नहीं बन रहा। परफेक्ट ट्राइंगल बनाने हमें ऐसे भी, परफेक्ट ट्राइंगल बनना हो तो एन क्यू को हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? एन क्यू इज मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई ओ क्यू, राइट बिलो एन क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू डिवाइडेड बाई ओपी प्लस आरपी बाई ओपीसी, आरपी बाई ओपी। ये भी ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ये आरपी इतना है, आरपी बाई ओपी, इट इज ऑल्सो नॉट फॉर्मिंग अ परफेक्ट ट्राइंगल। देयरफॉर अगेन हियर ऑल्सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, आरपी बाय पी क्यू प्लस इंटू पी क्यू बाई ओपी। देखो भी यहां पे क्या करे, एन क्यू बाई ओपी था, परफेक्ट ट्राइंगल नहीं बन रहा था, तो किससे मल्टीप्लाई करे? ओ क्यू ओपी से मल्टीप्लाई डिवाइड करे। अगेन ये दो कैंसिल हो गए तो मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे एन क्यू बाई ओपी मिलेगा, यहाँ पे पी क्यू कैंसिल हो गए तो आरपी बाई ओपी वैल्यू ही मिलेगा, राइट। नाउ विच इज इक्वल्स टू एन क्यू बाई ओ क्यू, एन क्यू बाई ओ क्यू, इसका रेशो है ये ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है अभी, दिस ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। एन क्यू बाई ओ क्यू विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ऑफ एंगल ए विच इज नथिंग बट साइन ए। एंगल क्या है इसका? एंगल, दिस ट्राइंगल का एंगल, the angle of this triangle ONQ is nothing but A. Therefore, perpendicular divided by hypotenuse NQ upon OQ can be written as sin A, and OQ by OP, OQ by OP. It is OQ is base here again. It is perpendicular side. OP is hypotenuse. OQ by OP. Yes, what we get here? Angle is B here. Base by hypotenuse, angle B, that is cos B plus as it is, right? Next, RP by PQ. RP by PQ. This one. यहाँ पे क्या है? अपोजिट एंगल्स क्या होता है? Which is equals to A. This angle is A, right? Opposite angles. This triangle and this triangle, these two are opposite triangles, therefore this angle is and this angle both are equal here. Now the angle RP by PQ, RP by PQ, अभी ये क्या एंगल है मेरा? It is PR is base, RQ is perpendicular side, PQ is hypotenuse, right? तो मेरा रेशियो क्या है? आरपी बाई पी क्यू, आरपी बाई पी क्यू, बेस बाई हाइपोटेनस, एंगल बेस बाई हाइपोटेनस इज कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस ए। नेक्स्ट, पी क्यू बाई ओपी, पी क्यू बाई ओपी, पी क्यू बाई ओपी, दिस ट्राइंगल वी आर टेकिंग नाउ, पी क्यू बाई OP, it is perpendicular divided by hypotenuse, the angle is here B, sin B. Therefore, sin of A plus B equals to sin of A plus B, which is equals to what we get here? Sin A cos B plus of cos A sin B, right? So the first formula क्या है? We have proved this one by using this geometric figure. क्या मिला हमें? sin A cos B plus cos A sin B. सिंपल कुछ भी नहीं करें यहाँ पे. Let us consider an initial line OX and which creates an angle by moving towards anti-clockwise direction, that is angle A, angle B.
and sum of these two angle is A plus B. And let us consider a point P on OZ and draw PM perpendicular to OX and PQ perpendicular to OY, where RQ is perpendicular to PM. Now the angle, these two angles are opposite sides, right? Opposite angles. Now when it is opposite angle, this angle and this angle which are equal, therefore it is angle A and this is also angle A. By using this angle OMP, by using MOP triangle, we found sin A plus B equals to sin A cos B plus of cos A sin B. Similarly, cos of A plus B also we can find by using this triangle only. Again by considering cos of A plus B, we sin of A plus B consider करते हैं, अभी cos of A plus B consider करेंगे, right? अभी ये तो मालूम हो गया ना, sin of A plus B कैसा फॉर्म हुआ. PM by OP is nothing but by considering this triangle OMP. By considering this triangle, we got PM by OP is a ratio of sin theta. Again, PM can be written as MR plus of RP by OP. PM can be written as MR plus of RP by OP as it is. Now, MR can be written as MR equals to Qn. Qn as it is लिखे plus of RP as it is by OP. Now, denominator write separately. NQ by OP plus RP by OP. Now NQ by OP is cannot forming a perfect triangle. Therefore, by multiplying and dividing by OQ here, and similarly RP by OP is which cannot also create forming an perfect triangle. Therefore, we are multiplying and dividing here PQ. By using these ratio, we got sin A cos B plus cos A sin B, which is nothing but the value of the compound angle sin of A plus B, right? Similarly, write down this one. Now next, second one for cos of A plus B, right? I remove this one, right? Now let us consider cos of A plus B. Again triangle, let us consider MOP as it is same. MOP, right? Now the triangle is MOP. What we get here? MOP cos A plus of B. The ratio of cos is what we get here? Base by hypotenuse, that is OM by OP. OM by OP. Now OM can be written as ON minus MN. ON minus MN upon OP. लिख सकते हैं OM equals to ON minus of MN. Right, this much and difference of this much, then we get again OM only. Now ON minus MN, ON keep as it is, whereas value of MN which is equals to RQ, value of MN, ON as it is, ON keep as it is, minus of MN equals to RQ upon OP. Now write separately denominator ON by OP minus RQ upon OP, right? ON by OP minus RQ upon OP. Now ON by OP, let's see. ON by OP, यहाँ पे perfect triangle formation नहीं हो रहा. ON by OP. Now again here also multiply and dividing by OQ. ON by OQ, OQ by OP minus again RQ by OP, RQ by OP. एक लाइन हो रहा है यहाँ पे, एक लाइन हो रहा, परफेक्ट ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो रहा. देयरफॉर यहाँ पे भी क्या करना है हमें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय PQ, RQ by PQ
पी क्यू बाय ओपी, आर क्यू बाय पी क्यू एंड पी क्यू बाय ओपी. नाउ सिंपली substitute the values now. ON by OQ, ON by OQ. ON is nothing but your base by hypotenuse, that is nothing but sine A. It is nothing but sine A. What we get here? ON by OP. It is not sine A. ON is base here. Base by hypotenuse means it is cos A. Next, OQ by OP. OQ by OP. Again, cos B, it is again base by hypotenuse. Angle is here, cos B, minus of RQ by PQ. RQ by PQ. Here RQ is perpendicular. RQ by PQ, perpendicular divided by base. This is angle. This means this side is opposite side. This is hypotenuse. This is base, right? RQ by PQ. RQ by PQ, that is perpendicular divided by hypotenuse. That is nothing but angle A. That is sine A. And PQ by OP. PQ by OP. Now this triangle OQP. This is Q, right? PQ by OP. PQ by OP. It is perpendicular divided by hypotenuse. That is angle sine B. Hence, what we get here? Cos of A plus B equals to cos of A plus B equals to cos A cos B minus sin A sin B. Right? क्या करें यहाँ पे? Cos of A plus B again by considering MOP triangle, A triangle consider करें यहाँ पे भी. By considering this triangle, we have to find cos of A plus B, that is cos A cos B minus sin A sin B. क्या करें यहाँ पे? Cos का रेशियो क्या है? OM by OP. OM by OP. Now OM can be written as this much. OM can be written as OM minus of MN divided by OP as it is. Now ON as it is MN, which is equals to MN equals to RQ. Therefore MN ON minus RQ by OP. Now write denominator separately, ON by OP minus RQ by OP, which is equals to. Now ON by OP cannot form a perfect triangle again by using multiplying and dividing by OQ, and in the second term minus as it is RQ by OP, which cannot also form a perfect triangle. Then we also here multiplying and dividing by PQ. Then by taking its ratios, standard ratios of trigonometric functions, already you know well, by substituting those value, what we get here with respect to the angle A and B, cos of A plus B, which is equals to cos A cos B minus sin A sin B. Similarly, tan of A plus B भी फाइंड कर सकते हो. वो कैसा है देखेंगे, राइट? Similarly, for tan A plus B equals to tan A plus B equals to, just substitute ratio of tan can be written as sin A plus B upon cos of A plus B. Sin का रेशियो है, tan का रेशियो can be written as sin, tan theta can be written as sin theta by cos theta. Similarly, tan A plus B can be written as sin A plus B upon cos A plus B. Now similarly, write down the formula. Sin A cos B plus cos A sin B divided by cos A cos B minus sin A sin B, right? Now taking common here, cos A cos B, taking common cos A cos B from numerator and denominator, right? Cos A cos B कॉमन ले लो, क्या होता है दोनों टर्म में, विच इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में मैं cos A cos B कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा,
साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी cos b 1 minus of sin a sin b divided by cos a divided by cos a cos b। अभी क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे? cos b गया, यहाँ पे भी क्या है cos a चले गया, राइट। यहाँ पे क्या गया sin a cos b sin b cos a, it is right। now which can be written as, ये तो cos a cos b कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे sin by cos tan a minus of sin b by cos b plus tan b 1 upon 1 minus s tan a sin a by cos a tan a into tan b, that is nothing but tan of a plus b, right। the value of tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, right। सिंपली क्या करें, जस्ट sin a plus b cos a plus b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, cos a cos b कॉमन ले लिए, जो जो टर्म कैंसिल होता है कैंसिल करके रिमेनिंग एज इट इज रख दिया। दिस इज नथिंग बट योर tan ऑफ a plus b। तो आज क्या क्या फाइंड करें हमने, sin a plus b cos a plus b एंड tan a plus b। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, sin a minus b cos a minus b एंड tan a minus b कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।